Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are enjoying good health with great spirit of Islam. Today I am going to discuss few maxims and some other legal vocabulary. The maxim is a piratus et latronibus capta dominium non mutant. A maxim meaning things taken or captured by pirates and robbers do not change their ownership. कोई भी चीज़ अगर आपसे कोई स्नैच करता है, छीनता है, चोरी करता है या आपको लूटता है, तो दर हकीकत वो चीज़ उस लूटने वाले की मिल्कियत तसव्वुर नहीं की जाती और ना ही जो है उसकी ऑनरशिप जो है वो तब्दील हो जाती है। तो इसे बेसिकली हम जो है वो लीगल मैगजीम के तौर पर लेते हैं। अगेन जो है इसके साथ है अ टेम्पर क्यूजस कॉन्ट्रेल मेमोरिया नॉन एक्सटेट। अ टेम्पर क्यूजस कॉन्ट्रेल मेमोरिया नॉन एक्सटेंट। बेसिकली ये लैटिन्स और ग्रीक वर्ड्स हैं। फ्रॉम टाइम ऑफ विच मनी टू द कंट्रेरी डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रॉम टाइम ऑफ विच मनी टू द कंट्रेरी डज नॉट एग्जिस्ट। उस वक्त से जब दुनिया में पैसा जो है बतौर रुपी या मनी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगेन इसके साथ जो वर्ड्स हैं वो हैं, मैंने उस दिन भी कुछ वर्ड्स आपसे डिस्कस किए थे। एबंडन। एबंडन का मतलब होता है टू विथड्रॉ। टू विथड्रॉ from a legal right. Abandon, to withdraw ourselves from an object totally, to lay aside all cares for it, to forsake, to renounce। किसी भी चीज़ से जो है वो अपना ताल्लुक अलहदा करना, ये जो है लफ्ज़ है abandon। abandon। और मैंने डिस्कस किया था abandoned property। abandoned property, the expression abandoned property, or to use the more familiar term bona vacantia, bona vacantia comprises properties of two different kinds: those which come in by assets and those over which no one has claim. Property over which the owner has given up dominion and control with no intention of recovering it। इसके साथ जो वर्ड है वो है abandonment। ये लफ्ज हमने पहले भी पढ़ा था, abandonment। The giving up a thing, the giving up a thing, the external act by which the intention is carried into effect। Abandonment means the giving of a thing, the external act by which the intention is carried out effect। Abandonment is the relinquishment of a right, the giving up of something to which one is entitled। अपनी कोई जायदाद, अपना कोई लीगल राइट किसी दूसरे शख्स को छोड़ देना या किसी दूसरे शख्स को दे देना, इसको हम कहते हैं abandonment। abandonment। और इससे जो है रिलेटेड अब दूसरा जो वर्ड है वो है abate, to diminish or take away। abate, to diminish or take away। इसके साथ वर्ड है abdiction। abdiction, abdiction, abdicate is to renounce, discard, disclaim or refuse anything। Abdication is the renunciation or giving up of an office by a magistrate or person in office before the term of service and expired। कोई जो है पब्लिक ऑफिस किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करना, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ।
वर्ड ये हम पहले भी यूज कर चुके हुए हैं, दैट इज एबडक्ट। द वर्ड इज एबडक्ट, टू टेक अवे, स्पेशली अ पर्सन। और एबडक्शन जो है बेसिकली वो हम लॉ के उसमें कहते हैं कि किसी बच्चे का अगवा करना या किसी अंडर एज बच्चे का अगवा करना, ख़ास तौर पे एबडक्ट, किसी फ्रॉड के लिए, किसी धोखे के ज़रिए या फिर किसी और मकसद के लिए। टू इंड्यूस अ पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस बाय फोर्स और डिसीटफुल मीन्स, किसी भी शख्स को जोर ज़बरदस्ती या धोखे या फ्रॉड के ज़रिए किसी दूसरी जगह ले जाना, ख़ास तौर पर बच्चों को। एबडक्टर, वन हु एबडक्ट्स, एबडक्टर हम कहते हैं अगवाकार को। इसके साथ साथ जो लफ्ज़ है वो है एबेटमेंट। एबेटमेंट, द एक्शन और फैक्ट ऑफ एबेटिंग, दैट इज एबेटमेंट। और एबेट, ए बी ई टी, एबेट जो वर्ड है इसका मतलब है टू ऐड, टू इनकरेज, काउंट, countenance, formerly used in a good but now chiefly in a bad sense. The word abet is generally used with the word add, as in the phrase to add and to abet. To add and to abet. कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें जो है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है टू अवेल, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को जो है वो हासिल करना, दैट इज अबाइड। टू इक्विंस, टू इक्विंस, टू कंफर्म, टू एक्सेप्ट एज वैलिड, टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, ये सारे के सारे लफ्ज हैं अबाइड। और इसके साथ है अबाइड बाय। अबाइड बाय, अबाइड बाय के मीनिंग है to obey. Abide by means to obey, to accept। इसके बाद जो वर्ड है वो है abnormal। abnormal, not conforming to rule। abnormal, contrary to any law or sisters, किसी भी जो है वो कानून या किसी भी उसूल के मुताबिक ना होना, उसे हम एबनॉर्मल की डेफिनेशन में लेते हैं। वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड जो है बेसिकली हम रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मस्कन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रहने वाली कोई जगह, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अबोर्ड। लफ्ज़ है एबॉलिश। एबॉलिश, एबॉलिश मीन्स है टू एनल, किसी चीज़ को तारीख से ख़त्म करना या किसी चीज़ को मनसूख करना, तनसीख करना या उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। टू मेक वाइड, उसको यूज़ कर लेना, टू टर्मिनेट जो है उसको ख़त्म कर देना, और पुट एन एंड टू, उसको इख्तिताम पजीर करना, दैट इज़ द वर्ड एबॉलिश। वर्ड है एबॉर्शन। एबॉर्शन, द डिलीवरी और एक्सपल्जन ऑफ द ह्यूमन फ्यूटस परमानेंटली, किसी बच्चे की पैदाइश को ज़ाया करना या उसे ख़त्म करना हमेशा के लिए, इसे हम कहते हैं एबॉर्शन। टू काज एन एबॉर्शन इज अनलॉफुल। इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स हैं एबॉर्टिव। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मीन्स फ्रूटलेस। एबॉर्टिव बेमकसद, fruitless, unsuccessful, miscarrying, failing in its effect as abortive attempt। इसके साथ साथ जो है वर्ड है एवरेज। ए बी आर आई डी जी ई, एवरेज। एवरेज की मीनिंग है टू curtail। एवरेज मीन्स टू curtail, to shorten, to make shorter in words so as to retain the sense and substance। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है टू पुट एन एंड, टू सेट असाइड, किसी चीज को मंसूख करना, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को रिवोक कर देना। इसके बाद वर्ड्स हैं एब्रोगेशन। एब्रोगेशन इज द एक्ट ऑफ एब्रोगेटिंग द एनलमेंट
और रिपील ऑफ लॉ बाय अथॉरिटी, किसी कानून, किसी ताकत के जरिए किसी कानून को तनसीख करना, मनसूख करना, या उस कानून को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, एबॉर्गेशन। अब लफ्ज़ है एब्सकाउंट। एब्सकाउंट एब्सकाउंट मीन्स है टू हाइड, अपने आप को छुपाना, टू डिपार्ट, जुदा हो जाना, भाग जाना। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है एक वर्ड है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी इफ डन विथ इंटेंट टू डिफीट और डिले क्रेडिटर्स। लफ्ज है एब्सकाउंडर, वन हु एब्सकाउंट्स, one who hides to escape a legal process, that is absconder. Absence, la means non appearance opposed to presence, absence. अब यहाँ पर एक लीगल मैगजीम्स है, एब्सोल्यूटा सेंटिया, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया, एक्सपोजिटर नॉन इंडिजेट। A maxim meaning plain words require no explanation. Plain words require no explanation. A court may construct an act of parliament, but it may not distort it to make it accord with what the court thinks to be reasonable. Absolute means kule mukhtar, complete, perfect, final, without any condition or limitations. लफ्ज है एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन। एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन, a discretion although absolute is none the less a discretion to be exercised with reference to the true position and with perhaps even a greater sense of responsibility in that it is within limits final. Absolute discretion. एब्सोल्यूट स्टेट, ESTATE स्टेट, मुकम्मल ज़मीन, कंप्लीट ज़मीन। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मुकम्मल ऑनरशिप का राइट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट नोवेलिटी, एब्सोल्यूट नोवेलिटी, अ मेजॉरिटी, an invention which has not been published anywhere prior publication destroys the novelty of a patent. Absolute honor, person capable of disposing the whole interest in immovable property although it is charged or encumbered. Absolute privilege. Absolute privilege. A statement is said to be absolute privilege when it is of the such a nature that no action will lie for it. However false and defamatory it may be, and even though it is made maliciously, that is to say from some improper motive. Absolute privilege. कुछ वर्ड्स हैं इसके साथ, एक्सेस प्रोवाइडर। एक्सेस प्रोवाइडर, the person providing access to a telecommunication information system like internet, this is the access provider. Accessory or accessory, one guilty of an offense not principally but by participation as by command, advice or concealment. अब इसके बाद जो वर्ड्स हैं वो हैं accessory. Accessory is one who is guilty of a crime not by committing the offense in person as a principal, but by having in some way concern therein. By advising, an accessory is one who participate in an offense too remotely to be deemed a principal. Accessory.
वर्ड है एक्सीडेंट, injury resulting from unintended, unforeseeable, and unexpected cause, that is accident. तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द वर्ड्स दैट बिलोंग्स टू द लीगल इंग्लिश दैट वी यूज इन डेली life at court, or the material that used in the court. So we use these words by helping the statement or by knowing the knowledge of law. Thank you. We will discuss these types of words in other lecture, because our subject is a legal language, or the legal informative language that we use in the field of law.